In this video on the parallels between GMAT Prep and life, I'm going to talk about how we look at failure or how we deal with failure. Essentially, the way we deal with failure during our preparation is the same way we deal with failures in everyday life. Perhaps for some people, it is different depending upon how they look at GMAT compared to other aspects of their lives. For some people, GMAT is just a small trivial aspect, so naturally they will not care about फेलियर है या नहीं है बट कई लोगों के लिए GMAT is a much more important, not just important in terms of career or profession but in terms of how they look at themselves. Intelligence hai, and if especially I've seen that people who have faltered in their academics or faltered at entrance tests or competitive exams earlier in their lives, they seem to place a lot more importance on GMAT. Let's talk about how we look at failure. तो एक तो failure different levels पे होते हैं. Let me start with the example that I had in mind. Okay, I've seen a lot of people not willing to take mock exams. क्यों? और वो डिले करते रहते हैं, मॉक नहीं दूंगा अभी for months. Actually, some people do it for weeks, some people do it for days, some people do it for months. तो क्यों डिले कर रहे हैं? क्योंकि they are scared कि अगर मॉक रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो I'll be shattered, I'll lose motivation, I might just give up. The failure on a mock test would be so disastrous कि उनको लगता है they might just give up, they will lose hope, they'll not continue, and they want to continue, so they are not taking a mock. तो मॉक देने के कुछ एडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस तो हैं, यू गेट टू नो कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं, परहैप्स दे हैव ऑलरेडी इम्प्रूव्ड, और इफ अगर जो भी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है दैट विल बिकम क्लियर बाय टेकिंग अ मॉक. तो मॉक देने के क्लियर एडवांटेजेस हैं, बट वो नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज डिसएडवांटेज भी है. बट इफ दैट हैपन्स, बट इफ फेलियर हैपन्स, तो बेसिकली नेट नेट उनको लग रहा है इट्स नॉट इन माय फेवर. और नेट नेट कैसे निकल रहा है? बेसिकली अगर डिसएडवांटेज चाहे उसकी प्रोबेबिलिटी कम भी हो बट एक बहुत सिग्निफिकेंट है, इफ यू सी कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा. और इम्पैक्ट किसी भी चीज़ का significant is always in terms of the psychological impact. Okay, किसी के लिए जॉब चली जाना में also not be a significant impact क्योंकि psychologically they are not impact, उनको लगता है कुछ और ढूंढ लेंगे. किसी के लिए बॉस ने एक मीटिंग में प्रेज ना करना could be a significant impact क्योंकि साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट है, हम तो उसी से ड्रिवन है, राइट? बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस तो इट्स ड्रिवन बाय आर साइकी, राइट? क्या इमोशंस अंदर आ रहे हैं. तो अगर इमोशन बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं तो उसका बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट है. इमोशन स्ट्रांग नहीं आ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट स्ट्रांग नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि रियल लाइफ में वो अपने आप में कितना बड़ा इवेंट है. तो मॉक स्कोर कम आना रियल लाइफ में तो कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, कोई बात नहीं, उससे सीखो और जो चीज़ें इम्प्रूव करनी है उन पे काम करो. मॉक्स के तो कुछ खास खर्चे, यू डोंट पे अ लॉट फॉर टेकिंग अ मॉक, जो भी इट माइट बी $25 मॉक, तो ऐसा कुछ उसका रियल लाइफ इम्पैक्ट नहीं है. यू आर नॉट एबल टू स्कोर वेल ऑन अ मॉक. But when we say कि it has a lot of impact, we are essentially talking about the psychological impact. कि how much it impacts you internally, emotions कितने strong आते हैं. So right, the concern is कि I'll get very demotivated, I might just give up. So these are psychological, emotional responses to the situation. So but failure सिर्फ mock level पे नहीं होता, right? Failure is across levels. It starts from failing
एट द क्वेश्चन लेवल ऑल्सो, कि क्वेश्चन गलत हो गया, उसमें भी अलग अलग लेवल हो सकते हैं। कि मैं 2 मिनट में कोशिश कर रहा था क्वेश्चन को सॉल्व करने की, गलत हो गया, वर्सेस मैंने अपने आप को बहुत टाइम दे रहा, 10 मिनट लगाए, फिर भी गलत हो गया। दीज आर ऑल्सो फेलियर्स। इवन एक क्वेश्चन को करते वक्त एक स्टेप पे हो एंड देन यू आर नॉट क्लियर कि ऐसे करूं या वैसे करूं, एंड देन यू आर लाइक आई डोंट नो, दैट इज ऑल्सो अ फेलियर, राइट? कि आई डोंट नो the right way from this step to the next step. So there are levels of failures, and we all encounter these failures in everyday life also, right? Let's say you go and talk to somebody, and that person looks so uninterested in talking to you. That's a failure. Failure का क्या मतलब है? जो भी हमारा objective है, we are not able to achieve that, right? If you're going to talk to that person and that person seems completely uninterested, we have failed in our objective to strike a conversation or to take the relationship forward. And I'm not talking about romantic relationship in terms of approaching a girl, approaching a boy, just talking to anyone. Or essentially, you dress up in a particular way and then nobody gives you a compliment. That's a failure. So failure just means your objectives have not been met, right? तो वो failure तो हम daily life में ही encounter करते हैं day in day out. Variety of things don't happen according to our desires. The question is how we respond to them. तो GMAT में प्रिपरेशन में जब स्टूडेंट्स they are responding to failures, I keep reminding them that this is how we respond to failures in general. This is not a GMAT specific thing. This is just key in any domain of life. You are striving to achieve something, but that achievement is not happening. Now, what happens? That is how we are responding in the GMAT space also. So, how would you respond? How do we respond to failure? Why is failure a devastating thing? क्यों होता है एक फेलियर इतना strong impact? Why is failure such a devastating event? Of course, different failures will have a different level of devastation, will have a different level of impact, right? For example, faltering on a question or getting a question wrong may not have the same impact as getting 5 questions wrong in a series or scoring very poorly on a mock. So these are different levels of failure, so they'll have different levels of impact. But I think the main difference is only in terms of the magnitude. The direction is the same. तो फेलियर का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट ही क्यों है? तो क्वेश्चन में लोग वेयर्ड इन सम वे कि ऑफ कोर्स ये बात है, फेलियर है। पॉजिटिव इम्पैक्ट थोड़ा ना होगा, न्यूट्रल भी थोड़ी ना होगा, नेगेटिव ही होगा। तो एक तो हो गया नेगेटिव है, और एक है कि इतना स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि किसी और के लिए क्या पता स्ट्रांग ना हो। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो फेलियर एक इवेंट का इम्पैक्ट एक तो इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसको हम परमानेंट समझ रहे हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। कि फेलियर का मतलब है आई एम अ फेलियर और दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। अगर हमें लगे कि हाँ अभी फेल हुआ हूँ, ठीक है, आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स आई विल बी डन, so then this failure will not have much of an impact. या फिर I don't take it on my identity that I failed on this doesn't mean that I'm a failure. But if you make it permanent, either by taking the situation as permanent or by making it a part of your identity that I'm a failure, then it has a significant impact. That is one level. The second is even if I'm a failure, so what? I'm failing in a lot of aspects in life. So what? तो यहाँ पे दूसरा जो एक मोर फंडामेंटल लिंक
कनेक्ट होता है वो है दैट इफ आई एम अ फेलियर then I'm not a worthy person. Not, I'm not worthy of love and belonging, basic human needs. So if you, and this is what we have done as a society, कि everybody's worth is tied to their success or failure. But at the same time, just because society as a at large has done this doesn't mean that every individual needs to do it on his or her own level. It is entirely possible that I disconnect my worth from my success or failure within myself. And if that happens, I will not be devastated even if I fail. Even if I fail in a series, failure after failure, still I will not be devastated if I disconnect my worth from my achievements within myself. The devastation happens if the connection between my worth and my achievements remain within me. वो एक नेचुरल डिफॉल्ट स्टेट है क्योंकि एज अ सोसाइटी वो इतना कल्टीवेट किया जा रहा है एवरीबडी इज डूइंग दैट बट जस्ट बिकॉज वो कल्टीवेट कर रहे हैं एट अ सोसाइटी लेवल एंड एवरीबडी इज डूइंग इट डजंट मीन दैट वी आर हेल्पलेस still everybody retains a choice to go by the default setting which is that to keep the connection between one's worth and one's achievements और वो so these are this is an interesting part कि वो when you are achieving when you are doing well तो वो लगता है वो connection रखना भी चाहिए क्योंकि then you feel good oh I am achieving I'm more and more worthy but then you don't realize कि उसी coin की दूसरी side भी है that when you fail it's going to be devastating. So should we discard this connection just because if we are not succeeding then we are going to find ourselves unworthy? Is that the reason that it is painful when we are failing? That's why we should disconnect worth from our achievements. I don't think that's a good reason, even though that could be a reason for a lot of people. I think my point is larger. Regardless of whether you are succeeding or failing, why keep a link between your worth and your achievements? क्यों? Even if you are succeeding, तो अपनी worth अपनी achievement से क्यों निकालनी है? You are worthy regardless of your achievements. No, मतलब isn't that the kind of perspective you will want to have? Isn't that the relationship you will want to have with yourself? That you consider yourself unconditionally worthwhile. तो हमें अपनी वर्थ ही बार बार क्यों इवेलुएट करनी है कि मैं अचीवमेंट के बेसिस पे अपनी वर्थ निकालूंगा तो my point is not कि when we are failing then we'll consider ourselves unworthy so that's why let's disconnect worth from achievements. My point is more fundamental. Why can't we just consider ourselves worthwhile unconditionally? अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है and something I want to emphasize कि there is no way I can consider myself worthy unconditionally if I don't consider others worthy unconditionally. So there is inner consistency we all have. And again, I'm not saying it theoretically, it is something that you observe. But I might have read it also somewhere, but it is just something that I've observed over time. If I'm judging others on the basis of their achievements, then I think that this is how it is to be. Then I'll evaluate myself also on my achievements. There is no way out of it. अगर मैं चाहता हूं that I consider myself worthy unconditionally, then I have to begin to look at others also as worthy unconditionally. तो these two go hand in hand. जितना मैं लोगों को worthy मानना शुरू करूंगा उतना धीरे धीरे I'll see that my judgments against my own self also evaporate. Or as a society, again, we are very prone to criticizing others, to judge others. We don't realize कि
ये जो जजमेंट मसल हम इतनी स्ट्रांग कर रहे हैं, जो क्रिटिसिज्म मसल हम इतनी स्ट्रांग कर रहे हैं by criticizing others, by judging others, this is the same muscle we'll hold against ourselves. There is no way out of it. तो अगर हम अपने आप को कंडीशनली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, if I don't want a relationship in my own self which is driven by a lot of self criticism and self judgment, then I have to stop judging others, stop criticizing others, look at others as unconditionally worthwhile. तो खैर, तो ये कनेक्शंस है हमारे दिमाग में, आ, कि फेलियर हुआ है तो इसका मतलब है फेलियर रहेगा, या मैं डेफिशिएंट हूँ, आई एम अ फेलियर, और मैं डिफिशिएंट हूँ इस चीज़ में तो मतलब मैं फंडामेंटली मेरी वर्थ भी डिफिशिएंट है, आई एम डिफिशिएंट एज अ ह्यूमन बीइंग. If I don't have these connections, then failure becomes a data point. कि अच्छा, I failed on this, so I'm not been able to achieve. But क्यों? तो जैसे for example you go and talk to somebody and the person seems very uninterested. Then you try to understand कि क्यों uninterested है, क्या. तो हो सकता है कि जो उनको अपील नहीं कर रहा, लेट्स से उनको अपील नहीं कर रहा तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल, एंड देन यू आर लाइक, ओ आई एम ड्रेसिंग स्टाइल मैं चेंज नहीं करने वाला, तो ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन एड्रेस. बट लेट्स से उनको अपील नहीं कर रहा the particular topic, then you say कि okay perhaps we can talk about some other topic, और उनको ये अपील नहीं कर रहा कि ये स्टांस क्यों ले रखा है, then you can explain or you can engage in a conversation कि ये स्टांस इसलिए ले रखा है. Or you are failing in a question or a mock, that also becomes a data point कि अच्छा why have I failed, कौन कौन से सेक्शन में, अच्छा ओवरऑल ही फेल हुआ तो सब पे ही मुझे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो फिर तो टाइम लगेगा अभी काफ़ी. डू आई हैव दैट टाइम? नहीं है तो फिर मैं जीमैट नहीं कर सकता. अब यहाँ पे एक अलग सोर्स ऑफ सफरिंग होती है कि टाइम तो मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा, बट टाइम है नहीं, जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं लाइफ में, तो देन आई एम कॉन्स्टेंटली सफरिंग कि नहीं हो पाएगा. हाँ, तो फिर वो नहीं हो पाएगा. तो डजेंट मीन कि योर लाइफ विल नॉट बी ब्यूटीफुल और विल नॉट टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल, विल नॉट टर्न आउट टू बी अ हैप्पी लाइफ. हम ये सारे कनेक्शंस बनाते रहते हैं, जैसे फेलियर के साथ बनाते हैं कि फेलियर हो गया तो मतलब मैं ही फेलियर हूँ, मैं ही फेलियर हूँ तो मैं वर्दी भी नहीं हूँ. वैसे ही अगर जीमैट नहीं होगा तो मेरा करियर नहीं होगा, करियर नहीं होगा तो लाइफ बर्बाद है, एंड सो ऑन. दीज कनेक्शंस मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि हम ये बना रहे हैं इतने बड़े बड़े कनेक्शंस उसके पीछे, तो इसलिए एवरीथिंग सीम्स टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट. बट एट द सेम टाइम जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर कोई भी फेलियर हो रहा है, कुड बी अ स्मॉल फेलियर इन टर्म्स ऑफ कि नेक्स्ट स्टेप समझ नहीं आ रहा मुझे इस क्वेश्चन का, या फिर ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, या फिर मॉक स्कोर कम आ गया, या फिर एक्चुअल एग्जाम में स्कोर बहुत कम आ गया. कुड बी फेलियर एट एनी लेवल. What is helpful is to understand कि now what can I do that's going to help me the most, and that is never कि we become dejected and disappointed and then just suffer. इससे तो कभी भी हेल्प नहीं होती, राइट. आई नो कि मैं यहाँ पे बड़ा आराम से बता रहा हूँ, इससे कभी भी हेल्प नहीं होती, तो देखो सफ़र मत करना फिर. एज इफ कि देखो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ भी ऐसा होता है, आई एम ऑल्सो राइट इन द प्रोसेस. तो मैं कौन सा क्रॉस द होल थिंग एंड नाउ आई एम ऑन द अदर साइड, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज ऑल लर्निंग फॉर मी. अदर मैं इन चीज़ों के बारे में बात ही इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल बातें हैं ये. आ, मेरे पे एक तो अभी लाइफ में ऑलरेडी बहुत इम्पैक्ट रहा है इन बातों का, और आई वॉन्ट टू फर्दर imbibe these things in my life. But again, the point is कि all this suffering, becoming disappointed is not helpful. Helpful तो नहीं है, but भी of course मतलब it's not that we are consciously choosing to be disappointed or to be sad or to suffer. So that's what we are trying to understand in this case कि हम suffer कर क्यों रहे हैं, because we are making all those connections.
तो बात है वो कनेक्शंस कैसे ना बनाए। तो पहली बात तो है टू अंडरस्टैंड कि कनेक्शंस बन रहे हैं, because of course many a time we are not even aware we are making those connections, and that's why these things have a very significant impact on us. The next step becomes कि अच्छा ये connection तो बन रहे हैं, मैं कैसे तोड़ूं? तो तोड़ना is a gradual process, at least that's how I understand it, and that's how it has been with me. It happens over a period of time that you consciously just see कि this is not the connection I want to make, not with me, not with others. तो others के साथ बहुत ज़रूरी है, because वहाँ पे you are more conscious. ठीक है, अपने साथ तो जब मेरे साथ कुछ होता है देन इतने सारे इमोशंस अंदर आ जाते हैं, देन आई एम जस्ट ड्राउनिंग इन दोज इमोशंस। बट दूसरे के साथ व्हेन आई एम लुकिंग एट अनदर पर्सन, then I can consciously choose that I am not going to evaluate that person's worth by his or her achievements, or uh, his or her failures or successes, especially with failures, right? Because we have a tendency to look down upon people who are failing, or prone to judging others, criticizing others. But these things are all backfire on us, because that's the same thing we do with ourselves, as I said. So this is a journey. So gradually we become better and better at handling failures. And perhaps over a period of time we stop calling them failures, we just call them mistakes, or we could just call them learning opportunities. Right? कि अगर mock में score कम आए, you can call it a failure, or you can call it a data point to learn from. Similarly, question गलत हुआ है, that means there is something to learn there. So it could be a learning opportunity rather than a failure. But right now, everything triggers those feelings that we have failed, because उसके पीछे बहुत strong emotions हैं, बहुत links बना रखे हैं हमने. Essentially, everything is tying back to our worth. वो अगर हम disconnect कर दें, we can just engage with life and see, okay, what can I learn from this? What can I improve? What can I do? We'll do our best in any situation. And that is all we can do, right? And if we keep doing our best over a long period of time, a lot of good things happen to us. But I think that is also secondary. Our experience of life is greatly enhanced if we are just constantly focused on what is the best that I can do in this situation, instead of getting overwhelmed with a lot of negative emotions every time we come close to even a tiny failure. Failure has a lot of impact on us, because essentially connecting it with our identity, with our worth. When we disconnect that, me, I'm worthy, irrespective of my achievements, irrespective of my failures or successes, then there is a potential. And I can just look at failures as data points, as things to learn from, as things to improve upon. So I'll give my best and then see what happens. Whatever happens, I'll take it from there. My worth is never in question. So I'm not in a constant threat mode. फेलियर और हो गया तो फिर तो इट्स डिवास्टेटिंग, तो डिवास्टेटिंग नहीं रहेगा फिर वो, इफ माई वर्थ इज नॉट एट स्टेक. इट्स डिवास्टेटिंग सिंपली बिकॉज माई वर्थ इज एट स्टेक. इफ माई वर्थ इज नॉट एट स्टेक, तो आई एम नॉट इन अ थ्रेट मोड, तो आई एम एट पीस. उसके बाद आई एम गिविंग माई बेस्ट, रेदर फिर मैं ज़्यादा बेस्ट दे पाऊंगा अपना. अभी तो लॉट ऑफ माई एनर्जी इज sucked by this constant threat mode that I am in. So yeah, so once we start responding to failures in a different way, we'll respond to them differently, both in our gym and profession and in life. That's all I wanted to share.